Hello students, hope you are doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the topic for today is disequilibrium in balance of payment. So previous lecture में हमने डिस्कस करा था what are the causes of this disequilibrium in balance of payment. So हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में what are the consequences and what are the cures for this disequilibrium in balance of payment. So let's start. So these are the references from where the PPT content has been made. जैसे हमने डिस्कस करा था बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके ये आइटम्स होते हैं करंट अकाउंट, देन यू हैव कैपिटल अकाउंट, देन यू हैव चेंजेस इन रिजर्व्स एंड एरर एंड ओमिशंस. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर दी कॉजेस, जिसमें हमने डिस्कस करा था पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसमें आप देख सकते हैं डेफिसिट इन द कंबाइंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट. जब भी डेफिसिट आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, दैट इज करंट एंड कैपिटल अकाउंट में, सो इट इज रिगार्डेड एज अनडिजायरेबल फॉर द कंट्री. This is because such a deficit has to be covered by borrowing from abroad and or attracting foreign exchange or capital from abroad. जब भी आपका डेफिसिट होगा उसको कंपनसेट करने के लिए आप बोरो करेंगे फ्रॉम अब्रॉड. दिस में रिक्वायर पेइंग हाई इंटरेस्ट रेट. अगर आप ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री बोरो करेगी कोई भी फंड किसी और कंट्री से या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, लेट सपोज आईएमएफ से या फिर आप किसी और इंस्टीट्यूशन से बाय करते हैं, सो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो. So these will increase the money burden of the debt. So obviously the debt will increase and obviously that will lead to the burden. So money burden will increase. Reduction in the financing available for international transaction. अगर balance of payment में disequilibrium होता है, so that leads to reduction in the financing available for international transaction. आप कंट्री जो भी कंट्री ये सिचुएशन फेस करती है उसके पास जो फाइनेंसिंग होती है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग वो रिड्यूस हो जाती है. फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर में लूज कॉन्फिडेंस इन अ कंट्री प्रोस्पेक्ट्स लीडिंग टू मैसिव एसेट सेल्स और कैपिटल फ्लो. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होता है सो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दोज हु इन्वेस्ट इन द कंट्रीज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे लूज द कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज प्रोस्पेक्ट्स लीडिंग टू मैसिव एसेट सेल्स, जिसको हम कहते हैं कैपिटल फ्लाइट. ये वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज है जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट या सरप्लस होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है. उसके बाद अगर हम देखें करंट अकाउंट डेफिसिट, जो इसमें करंट अकाउंट में आपको पता है मेनली गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम. अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है, इज जनरली थॉट टू बी that is undesirable. It is always undesirable, particularly in the long run. The greater the deficit and the longer it lasts, the more of an issue it will be. कैपिटल अकाउंट जब भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, जनरली वो डिनोट करता है लॉन्ग. अगर शॉर्ट रन में हम देखें, द डेफिसिट मीन्स दैट द कंट्री इज एंजॉइंग अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in the short term. This is thanks to the higher level of consumption through import. करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कंट्री का. ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में चीप प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे हैं, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं या जो भी पॉपुलेशन है, दे एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट इफ द डेफिसिट इज बीइंग फंडेड, जो वो डेफिसिट है करंट अकाउंट का, इफ इट इज बीइंग फंडेड बाय इनफ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी अगर बहुत आती है, दिस विल मीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री इन द फ्यूचर. अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कंट्री में, इफ द डेफिसिट जो है दैट इज बीइंग फंडेड बाय इनफ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस विल मीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री. जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ऑब्वियसली उतना ही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो होता है वो जहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी और कंट्री से, वहाँ वो वापस जाता है. Inward investment also leaves the country more exposed to the whims of external investors. If the deficit is being funded by outflows of foreign reserves, then clearly the reserves will run out in the long run. जो balance of payment disequilibrium होता है, और if it is due to the current account deficit, the consequences can be that the higher investment will lead to more the interest and dividend payment flowing out of the country. That is one of the consequences of balance of payment disequilibrium. There is also the danger of withdrawing money by foreigners, as
the if there is disequilibrium, then as we have already discussed that जो investors का confidence होता है वो lose हो जाता है. So withdrawing of money by foreigners या foreign institutional investors takes place. An alternative may be to draw on the reserves of the country, which may also lead to financial crisis. So जब balance of payment disequilibrium होता है या deficit होता है, तो जब country अपने reserves use करने लग जाए उस केस में, तो that ultimately reserves उनके reduce हो जाते हैं, and that can lead to financial crisis. So this is also one of the consequences. उसके बाद क्योर्स की बात करें, अगर कैसे इस डिसइक्विलिब्रियम को हम रिमूव कर सकते हैं या फिर कंट्रीज क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं. सो पहला होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन. ऑब्वियसली आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है जब जब आपका ज्यादा इंपोर्ट होता है, सो एक्सपोर्ट को आप एनकरेज कर सकते हैं. सो एक्सपोर्ट प्रमोशन इज वन ऑफ दी स्ट्रैटेजी फॉर क्योरिंग दिस डिसइक्विलिब्रियम. देन यू हैव रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. सो जैसे हमने डिस्कस करा था, आरबीआई जो होती है डेट इट प्लेज, जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, डेट प्लेज अ मेजर रोल. So through RBI, through its MPC, that is Monetary Policy Committee, it can frame policies which help the government in reducing inflation. So जो central bank होता है, it plays a very important role and reduce कर सकते हैं आप inflation, and that can be a cure for disequilibrium in balance of payment. उसके बाद एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज. एक्सपेंडिचर स्विचिंग में ये होता है, दीज आर द पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट एनकरेजिंग पीपल टू स्विच देयर स्पेंडिंग फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स टू डोमेस्टिक. सो आप जो पॉपुलेशन होती है उसको एनकरेज कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे दे स्टार्ट परचेजिंग डोमेस्टिक गुड्स रादर देन द इंपोर्टेड गुड्स. सो आप डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं. दीज पॉलिसीज इंक्लूड टेरिफ एंड प्रोटेक्शनिज्म इन जनरल एंड मैनिपुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट टू चेंज द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स. सो इसमें एक्सचेंज रेट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या कंट्री एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू कर सकती है. दिस कैन बी वन ऑफ द टेक्निक अंडर दिस. फिर जैसे हमने कहा डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है. जनरली चाइना ने जैसे ही यूज करा था, तो करेंसी को आप डीवैल्यू करते हैं, सो आपका एक्सपोर्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो बाय डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, so your export will increase. So devaluation is done by a government order when a country has adopted a fixed exchange rate system. So care should be taken, but आप devalue जब करते हैं, so the devaluation should not cause a rise in internal price level. उससे inflation नहीं होनी चाहिए. So that a country or government should take into consideration. So these were some of the cures, जैसे devaluation, expenditure switching policies, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन. एंड कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें, सो जैसे हमने कहा है, विड्रॉल ऑफ मनी हो जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, एंड इट कैन लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है. और जैसे हमने कहा कि जो आपके अगर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट जो होता है, अगर इफ इट इज फंडेड बाय इनफ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो उतना ही जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उतना आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड देना पड़ता है कंट्री को. सो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो लीव्स द कंट्री मोर एक्सपोज, मतलब जो कंट्री जो होती है दैट इज मोर एक्सपोज टू द विम्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स. सो एंड borrowing बढ़ जाती है, that is also one of the consequences. So these were the consequences and cures for disequilibrium in balance of payment. So next we will discuss some of the topics which are related to this balance of payment. So that is all for today. Thank you so much.